कुछ कहानियाँ सिर्फ़ कहानियाँ नहीं होती हैं, वो आईना होती हैं इस समाज का, जिससे हम आँखें मिलाने से डरते हैं। निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई ऐसी ही एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी की राइटिंग के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है, वो ये है कि उनकी राइटिंग रियलिटी को जो जैसा था, उसको वैसा पोर्ट्रे करती है। हिज़ राइटिंग इज़ प्योर ब्रूटल ऑनेस्टी। Sometimes you'll want to question what he has written, and you would want to, like, you would not be able to believe that was this the reality of those times. But yes, his writing makes you do that. His writing doesn't care whether you like it or not. Now I know that whenever an author is writing, the author knows that उनकी writing को पसंद किया भी जा सकता है और पसंद नहीं भी किया जा सकता है. Now the reason I said कि मुंशी प्रेमचंद जी की writing it doesn't care whether you like it or not is कि वो एक स्टोरी के किसी भी एस्पेक्ट को कवर अप नहीं करते हैं. Now what do I mean by that? For example, अगर वो एज गैप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं एक चाइल्ड मैरिज के, तो वो उस स्टोरी के या उस इशू के किसी भी एस्पेक्ट को कवर अप नहीं करेंगे. उसके जो सब एस्पेक्ट को वो हाईलाइट कर सकते हैं, वो उन सबको हाईलाइट करेंगे. डज़न्ट मैटर उसके बाद आपको आप डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, लाइक इट बिकम्स अ डिस्टर्बिंग थिंग फॉर यू, या आप कितना भी अनकम्फर्टेबल फील करें, जो कि बहुत कम लोगों की राइटिंग में ऐसा देखने को मिलता है. तो वो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आई. Which by the way brings us to the story of Nirmala. Nirmala की जो story है, it revolves around the themes of child marriage. निर्मला जो हमारी story की protagonist है, उसकी बहुत छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती है. एंड जिस पर्सन से उसकी शादी होती है, उसमें लाइक उस पर्सन में और निर्मला में काफ़ी ज़्यादा एज गैप होता है, to the extent that the person whom she gets married to is almost the age of her father. And plus उनके 3 लड़के भी होते हैं, and उनकी वाइफ जा चुकी होती है, as in like she is no more in the world. Now just imagine the age gap. And when I got to know about this particular aspect of the story, that there is this such a huge age gap, I knew that this book is going to be difficult for me to read, not because of its writing or language, but because of the emotional strength that I would need to follow through the pages. So anyway, I did read it, and as we follow through the chapters, we come across a couple of disturbing elements which will make you question a lot of things. And I don't want to divulge too many details right in this video, because you need to read this book. It's a sad and a beautiful one. Like, maybe I won't call it a beautiful, but it is honest, and that's where its beauty lies, I would say. And also, by the way, in case I forgot to mention, this is a coming of age story, and I feel इस story में emotional turmoil को काफ़ी अच्छी तरीके से depict किया गया है. As in, निर्मला की age at the time that she gets married is around 15 or 16. So basically वो अपना childhood जी रही होती है उस time पर, जिस time पर उसकी marriage कर दी जाती है. And after getting married, of course she has a family to take care of. So जो वो responsibilities आती हैं, and the kind of questions that keep on lingering in her mind, they are shown beautifully. So वो एक अच्छी बात लगी मुझे. मतलब मुझे पूरा जो भी किसी के दिमाग में ख्याल आएगा, मतलब अगर उसको सडनली इतना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से राइटिंग ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर किया है. एंड ऑल्सो मुंशी प्रेमचंद जी, ही ब्यूटिफुली यूजेस मेटाफर. वो एक मतलब इस तरीके के मेटाफर्स यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी में कि आपको बहुत ही कनेक्शन फील होगा उनकी स्टोरी से. सो या, दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग that I liked from it. So this story is it's sad, it's heartbreaking, but it's beautiful because of its honesty. Maybe I won't call it a beautiful as I said earlier, because I don't want to romanticize sadness. Let's just say it that way. I will say that it is honest, and that's why it's that's where its beauty lies. So if you're looking for a read that is sad and honest,
in portraying what it does, then I think this can be a really good recommendation for you. And also इस book के कुछ passages जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, उनको मैं अपनी newsletter में share करने वाली हूँ. So in case you have not subscribed to my newsletter, you can subscribe. The link will be in the description, and also it's in the profile section of my channel. I think, yeah, it's there. Yeah, you can also follow me on Instagram, on Substack. Substack is my weekly newsletter, in case you don't know. I share a lot of things. I share some of my poems there. I share some of my general write-ups that I do. I share it as part of that newsletter. So in case you want to be a part of that community, which I hope you do, by the way, you can subscribe to my newsletter. It's a weekly newsletter. It gets delivered every Sunday. By the way, let me know in the comments, आप लोगों ने ऐसी कौन सी स्टोरी पढ़ी है जो कि सैड है but it's beautiful in its sad way. So let me know in the comments. And in case you have read this book, tell me, how did you find it? I know a couple of you have loved it. I know who you are. So yeah, I think that's it for this video, and I'll see you in the next one.